Okay. So Hello, sir. yes, Sir, I have a question about, sir, that LRU approximation with reference bit. yes. Please tell me. Sir, what is the need of, sir, that temporary that reference, sir? Temporary reference in the sense what? Sir, that which we use to update the frames. Update the frames. Okay. Update the frames. Why you are using? One thing I'll just tell you. If you are using a single reference bit, can you identify there that how frequently in the near past it has used? No, sir, but we can use that serial, na, sir, that page number. Which page number? Sir, means, sir, for example, if we are given a page serial of, sir, like 5012030423 Mm-hmm. So, sir, so for example, let's there be four uh, page means RAM frames Mm-hmm. For page frames. Okay. at TU means at first time interval. Let 5012 get like processed, Hmm. and then 0304 will get processed. Hmm. Sir, so we do not need that reference means temporary reference bit. We only need that this page numbers, na, so the serial of page numbers. That's okay. Now, when you are using the LRU approximation, specifically use explicitly the reference bit. But if you are using a single reference bit, you can only identify about that in the recent past, means the last one, whether it has referred or not. You cannot think about that for the last NT seconds it is going to be used. If T is the time interval after which that reference bit gets changed, if somebody will ask that what is the frequency of using that particular page in n into t timing, that you cannot tell in case of a single reference bit. Rather, if you can prefer this extra reference bit, in extra reference bit something will be represented with 1 and 0. The multiple ones, if it is present at the left hand side, means it is currently used, just in the recent past it has used. If in the right hand side, means rightmost bits, if it is become set as a 1, means it now in the past it has used it, not in the recent past it has used it. Sir, and one more question, sir. Sir, let for example, in one time interval, one page number is accessed twice. Twice. Still, your reference bit will be considered as a 1 only, one change. Sir, but then we have to make two changes, na, sir? No, that I understood. That I understood. But as per that algorithm says that after t second you have to use it. Suppose frequently that page is used for 2-3 times he has fetched it. It may be a continuous. Suppose same page ka different line numbers are currently fetched. In that case, do you need to repeatedly say that no 5 line numbers he has fetched from the same page, means 5 times it is going to be updated? It may not be. Yes, that's the reason. Sir, sir, and in that updation phase, we have to first add and then shift it to the right side. Yes. Side. First you have to change it, change the update, left, then you can shift it. मतलब वो ये जो था 8-bit 1, then we have to shift it to the right and then proceed to the next time interval. First you updated in the leftmost bit, then you shifted to the right. There. Okay, sir. Okay, so sir. 0 will be extra added at the leftmost bit. Okay, fine. Okay. Okay. So last class we discussed why it is using a cylinder and head and the sector. Okay. So as per the last class example, we are finding it is present in the this 130. Again, I'm repeating so that you can find a formula from here. With 130, 129 is my block number, but this block number basically converted to the CHS. And why it is a block number? As per the CPU point of view, it is a collection of blocks, which is represented in array index. So if the array index become 129, actually you are searching for the 130th block. If it is a 130th block, last class you told me, since my single cylinder takes 48, then this 130th block will becomes in the third cylinder. Yes,
third cylinder means if you represent 0th cylinder, 1th cylinder, 2th cylinder is the name for this. Okay, so we are finding the cylinder number is 2 where it is present. Then you go for in this cylinder which surface. Here the surface will be represented as head. Since in each surface will be a one track, and one track will be consist of 8 sectors. So rest 130 minus 96 is 34. So 8 sector means 8 into 4, 32. Means 8, 8, 8, 8 pack. Means first surface, the lower surface pack, its upper surface packs, its lower surface pack, again its upper surface pack, and its lower surface where the data is present. So what is the number? If you can say it is 0, 1, 2, 3, fourth number. Yes, and why it is comes as a, then head is 4. In the 4 it is present, but actually as per one number is concerned, it is in the 5th place. In 4th places, which sector? The sector number here it is basically what? That is 2. Why? After 34 minus 2, how much it is coming? 2 only, means 1 and a 2. In 2th sector it is present. So if you can look into this formula, how this 130 comes into picture. 130 comes into picture. This Divided. 1 comes as a 2 into this 2 into 8 into 6. Why 8 into 6? Each track has 8, and in a cylinder there are how many surfaces? 6 surfaces. So 6 into 8, 48. Plus, boliye, ek ek karke. Then how we are getting? Then tell me, how this 32 is reserved? 32 wala bol dijiye. Kaisa 32? That is 8 into 4 is the 32. 1 minute. 8 into 32. Then what is the next? 2. Yes, but what you need here? 129. Actually, it is not 130. We calculated it is a 130. But if I take it is 129, then it will be again minus 1 or not. क्योंकि 130 से 1 माइनस किया, यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे कि नहीं? So हमारा 2 क्या है? Cylinder. 4 क्या है? H. Then this 2 is what it is here? Sector. So it is present in what? CHS format में कितना में आया? This is in 2, this is in 4, this is in 2. Okay. Then what is this 8? 8 is what here? Each track is sector. Per track. Yes or no? What is 6 here? Surface. Total surface. Though you can say the number of heads. Number of heads. Correct? Then what is 8 here? Same SPT. And what is 4 here? H. And this become 2 minus 1. This is the formula or not? So just look into it. This is the formula comes. What it says? C. C is what? Cylinder. Then HP, HPS. HPC is what? What is the HPC? Heads per cylinder. कितना cylinder है इसमें? 6. ठीक है ना? ये 2 है. कितना cylinder है? Heads per, no. Number of heads per cylinder. Number of, no, फिर से बोल रहा हूं, गलत. Number of heads per cylinder. एक सिलेंडर में कितना था? एक सिलेंडर में कितना हेड्स था? 6. इसका नीचे वाला एक, इसका top one, below top one, below one, and top one. So total is what? 6. So this is becoming 6. What is H? H here has comes as a 4. What is SPT? Sectors per track. Sectors per track हमारा कितना आया? 8. And what is S? S is the sector number, and this is minus 1. Is the formula comes here? 2 into SPT. If you can see, C into HPC into SPT is this much. Yes. And what is this one? H into SPT is this much. And this S minus 1, S is the sector minus 1. The formula comes out. Are you getting my point? So no need to remember the formula. Rather, if you can know the style, how it is maintaining, you can easily do it.
समझ में आया कि नहीं? इसको ए प्लस दे दिया तो इसलिए कंफ्यूजन है। इसमें क्या कॉमन है बोलिए तो 8। 8 मतलब क्या है? एसपीटी कॉमन। एसपीटी को कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या रहा? 2 into 6. 2 is my cylinder number and 6 is my what? The number of heads per cylinder is 6. And this is coming as a H into SPT. This is H is 4 into SPT plus this sector. Sir, No need to read this one. And quickly you can find one more. I'll give you. Yes. सोच लीजिए कि हार्ड डिस्क में 16 सरफेस है। एक कर लीजिए 16 सरफेस, ओके, एंड इन ईच सरफेस हैज 4 tracks. Yes, and one track has 16 sectors. Yes, और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए? 16 सरफेस मतलब 16 हेड्स बन गया। ईच सरफेस में 4 ट्रैक है, 1 ट्रैक है, 16 सेक्टर। आई वांट हियर 520 नंबर ब्लॉक। समझ में आ गया? दिस इज माई 16 surface. 16 surface means how many heads? 16 heads. Then each surface having how many tracks? 4 tracks. And one track having how many sector? 16 sector. So where this 520 present? 520 थोड़ा कम हो गया क्या? हाँ? Enough? मोबाइल यूज कर पाओ। हाँ, कैलकुलेट वही। No, मुझे चाहिए, this is my what is block address. This block address will be converted to what? CHS. So what is C, what is H, what is S? लास्ट सेमिस्टर का अगर देखोगे एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क। ट्राई कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, 16 सरफेस, वो तो 520 थोड़ा कम है, मजा नहीं आएगा। 920 520 पहले ही मिल जाएगा। Which cylinder, which head, which sector? ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने से जल्दी बन जाएगा। फिर से मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ऑनलाइन पहले बोलो आप लोग, कौन बोलते हैं देखते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट फर्स्ट। हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ, ओह सॉरी। जो एटलीस्ट अटेंड किए थे वो बना देना चाहिए, नहीं तो आप 5 क्लास 10 क्लास का मैथमेटिक्स नहीं किया हो, फिर 10th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं किया। टू, आई पुट 2 देन, हाँ नो प्रॉब्लम। नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी कर लूं, मैं बस दे दिया हूं, ऐसे मत सोचिए कि मुझे तुरंत पता, मैं भी कैलकुलेट करूंगा आपका जैसा सामने ही। ओनली मैच हो गया तो मैं समझ लूंगा कि करेक्ट आंसर 2-3 लोगों का।
then I'll explain. No, head कौन सा? स्क्रॉल करो, क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओ फॉर्मूला देख के बताओ। फॉर्मूला देख के बनाओगे तो सीखने आप डिस्क को देख के बना लेना चाहिए। और आई कैन शो यू दिस, नथिंग रॉन्ग, बाय दिस यू आइडेंटिफाई। इससे करने का चाहिए। फॉर्मूला तो कोई भी देख के करेगा, क्यों नहीं मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं। कोई अगर थोड़ा ट्विस्टेड करके पूछ लेगा आप फॉर्मूला जानते होगे तो फॉर्मूला को ही सोचे, यू कैन नॉट डू इट। हाँ, सी कितना है? C2 H1 हेड 1 S 920 और 520 में भी 2 आ रहा है, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। आप उसके बाद 920 का आप बोल रहे हो, हाँ बोलिए। 2 1 नेक्स्ट। और मुझे पता नहीं आप बोले कितना, बोलिए उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ। 15 है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। सेक्टर नंबर 8, हाँ आपका 258, दैट्स योर आंसर। एनीबॉडी ऑनलाइन? 920 का 258। सिलेंडर जीरो 2 बनाऊ मैं ऑनलाइन? एनीबॉडी? कहां गए सब लोग? 2123 आपका आ रहा है, 2123। 2 ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम, दिस गुड, दिस फाइटिंग इज गुड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कोई भी आंसर नहीं मिला, एटलीस्ट इस बेंच में तो एक ही मिल गया। ओके, कैन आई डू इट ऑनलाइन? एनीबॉडी वांट्स टू टेल और आई विल डू इट? दीपंकर कोई है? नहीं है, कोई नहीं है मतलब, ओके ठीक है, मैं बता देता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। सो हाउ मेनी सरफेस? 16, head is 16, total head is 16. Then how many then cylinder का साइज कितना होगा? How many blocks present in the cylinder? 16 into S, each track पे कितना ऐसे ट्रैक है? फिर 16 ट्रैक्स, each ट्रैक पे कितना सेक्टर है? कितना सेक्टर है? 16 into 16 कितना हुआ? 256। मतलब एक सिलेंडर में कितना ब्लॉक्स है? 256, ठीक है ना। हमारा 920 के लिए कितना ऐसे चाहिए? कहां पर होगा, कौन सा सिलेंडर में? एटलीस्ट 0 to 256 एक से 256 एक, 257 से 512 एक, 513 से कितना आएगा? 256 ऐड करने पर 700 समथिंग, 769 समथिंग। सर ये थर्ड होगा ना। एंड 769 से 1024। हाँ तो करेक्ट सर है कि नहीं? थर्ड होगा तो ना, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आता है, मतलब क्या है? 0 1 2 3 थर्ड में आएगा। वही एक्सेप्टेड। ये तो पहले क्लियर हो गया, मतलब 10 मार्क्स से 3 मार्क मिल गया हमको। सर
हाँ हाँ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि वही 920 वही डिवाइडेड बाय डायरेक्टली आपको करना चाहिए 920 डिवाइडेड बाई 256 256। तो 3 जो आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कितना आएगा 3 3। सो दिस इज माई सिलेंडर। हम्म, बन गया? यस। हाँ सोच लीजिए कि ये मेरा थर्ड सिलेंडर है, 3th सिलेंडर। यस। इस सिलेंडर में एक ट्रैक पे कितना आता है, कितना सेक्टर? 16 सेक्टर। ओके, सो आप बोल दीजिए ये जो 920 मतलब कौन सा नंबर आप ढूंढ रहे हो? 921, करेक्ट और नॉट? 920 इट इज ए ब्लॉक नंबर, 1 से कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सा ब्लॉक नंबर है? 921। एक 0 1 2 3 सिलेंडर ओवर, 3 सिलेंडर ओवर मतलब 256 इंटू 3 कितना है? 256 इंटू 3 760 768। सो 768 माइनस कितना बचा? 1 920 है ब्लॉक नंबर। सो 1 से इंडेक्स करेंगे तो 921 है कि नहीं? 153, ठीक है ना? 53 सो 153 टोटल। इस 153 में एक एक ट्रैक में कितना है सेक्टर? 8 8 करके। सो अभी डिवाइड कर दीजिए, कौन सा में आएगा? 8 सेक्टर 8 तो 1 16 है तो 16 है 16 एक ट्रैक में 16 है 16 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है? कितना नंबर? 9 के आसपास, मतलब 9 का 9 रिमाइंडर। अरे कैलकुलेटर है। हाँ 9 यस। सो कौन सा में आया? 9 -1 तो फॉर्मूला में है, वो यहां पर माइनस करेंगे तो ये तो माइनस होगा ना, एक ही चीज है ना। यस। तो इजीली हम क्या किए? 2 ही डिवीजन कर रहे हैं, जो सीखे 2 ही डिवीजन किए। क्या किए? पहले 256 ले लिए, डिवाइड करो, क्वेश्चन जो आता है रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आएगा 153, ठीक है ना? उस 153 को नंबर ऑफ सेक्टर में डिवाइड कर दो, जो आएगा वो है क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 9 to 1 जो है उसको 920 रख सकते हैं। क्या क्या तो जो 920 था तो उसको 920 रख सकते हैं 921 इसलिए ना 921 से कैलकुलेट करोगे तो ये सेक्टर वाला सही मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? बिकॉज आवर सेक्टर नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम द 0, दैट्स व्हाई यू हैव इंक्रीज्ड 1। ओके सर ओके, एंड इफ यू कैन पुट दिस फॉर्मूला एग्जैक्टली इट विल कम। कितना आया? 399। फॉर्मूला ऊपर पुट करते हैं, आप डाल दीजिए, 1 मिनट में डालिए। सर ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए ना? ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए, फाइंड आउट के लिए नहीं। सी कितना है हमारा? 3। एचपीसी कितना है? हेड्स पर सिलेंडर, हेड्स पर सिलेंडर 16। एच कितना है हमारा? आया 9। एस कितना आया? 9। एसपीटी कितना आया? एसपीटी दिया है सेक्टर्स पर ट्रैक, एक ट्रैक में सेक्टर 16। कैलकुलेट कर दीजिए तो इज इट कमिंग 920? नहीं तो हम भी गलत किए। अरे ना 920 मींस करेक्ट। बट इससे अगर आप फॉर्मूला निकालोगे बहुत डिफिकल्ट है। यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, कैलकुलेट दिस थिंग्स, फॉर वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपको जल्दी मिलेगा। गॉट इट? सो दिस वे यू हैव टू डू। सो क्या हम सीखे? कुछ छोटा छोटा चीज सीखे कि once you know how the disks look like, then you have studied that your CPU generates what address? Block address. The block address has to be converted to what? CHS. Who is converting? The disk controller. The disk controller job is to convert this LBA, that is logical block address, to which format? C format, H format and S format. So that is the idea of this. वो जो डिस्कशन किया वही लिखा गया, nothing else. Then once you know that where my blocks are present, I know now. Yes or no? Suppose a file is coming, file has a two tracks, 2 sectors. One sector is 920, another sector is 925. Then 920 is generated by the CPU, and the CPU gives it to whom? To the disk controller. Disk controller says that it is present in the 399.
then somebody has to go to the 399 and read it. Who has to go? ऑपरेटिंग सिस्टम तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वहां पर तो कोई जाएगा ना. The head has to controller. The head has to be go to that place. Then only you can able to read or not. Means what you need. Once you know in which cylinder, which head, which sector your data block is present, then the next work is to how to read this data block. But for reading this data block, the time is an important factor. So how much time it takes to read a block when the CPU generates a block address? Means when the CPU generates this LBA, how much time it will take to read that block, that is called as a disk latency. The disk latency means time required to read a block after the CPU generates a LBA, logical block address. तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको ही बताना भी पड़ेगा. So we don't know disk latency. Assume that these are my disks, and I find that it is in the 3th what cylinder, 9th what head, and what is 9th sector. अभी बोलिए, if this is a arm and this is the spindle where this disk is moving, what is the movement criteria for fetching it? कौन पहले मूव करेगा? First 3 के लिए जाएगा. अगर question is assume that this is hardware and I told that it is present, your data block is present in the 3rd what cylinder, 9th head, 9th what sector. Then which one has to be fast move? ग्रामोफोन रिकॉर्ड का सोचिए, अगर यहां पर आपका एबीसी गाना है, क्या करते हो पहले? सबसे पहले 3 में जाएंगे. आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड का बस ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखो ना, एटलीस्ट तो पिक्चर में देखे होंगे. पहले वो क्या करेगा? व्हाट यू हैव टू डू? ब्रिंग द हेड एंड कीप इट इन द टॉप ऑफ द डिस्क. वो करेगा कि नहीं? मींस दिस हेड has to be rotate and bring it to a particular track. The track here, it is the cylinder. Every track forms one cylinder or not? Then what is the first idea? Head को लाइए, move करके एक track के ऊपर रख दीजिए. Then track जब आएगा, suppose in the same track, the head, which head it is present? 9th head. Then what he has to do? If this is my 9th head, the 9th head has to be activated. एक्टिवेटेड मतलब क्या होगा? 10 अगर सब में होगा, 1 इलेक्ट्रिक सिग्नल इसको पास करेगा. मींस नाउ ही इज गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस हेड ओनली, नॉट फ्रॉम ऑल हेड. चला गया? यस. आफ्टर इट विल बी गेट्स एक्टिवेटेड, देन क्या रीड कर देगा या और कुछ काम चाहिए? क्या काम चाहिए? वो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड आया, लेकिन आपको 9th वाला सेक्टर चाहिए. देन व्हाट टू डू? दिस डिस्क हैज टू बी रोटेट so that 9th sector will become below this black color, so that he can able to read it or not. So कितना काम किए बोलिए? What work you have done? Head, पहले head को proper track के ऊपर लाइए, सिलेंडर के ऊपर लाइए. फिर you have to activate this. Activate के लिए कुछ टाइम नहीं चाहिए. Activate करने के लिए अंदर क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर देगा. But head movement is a mechanical process. जो head यहां से आके यहां रहेगा, this is a mechanical process or not? Mechanical process always takes time. But to switch को एक activate करने के लिए कितना time लगता है? It's a fraction of a microsecond also. That doesn't matter. And after this, disc rotate करके वहां पर आएगा. This is also mechanical. This is also mechanical. That time is also required. So पहला कौन सा time चाहिए? Bring the head on the top of the track. That time. Then rotate the disc in such a manner that your sector has to become just below this head. or a second time, then you read that. Read that के लिए कुछ टाइम है. So 3 टाइम हुआ कि नहीं? Yes. Move the track, move the head to a particular track is called as a seek time. SEEK, seek time. समझ में आएगा? Move the track is called as a seek time. Rotate करके पूरा नीचे आएगा, that is called as a rotational time. After head के नीचे जब आ जाएगा track, then reading it, that is called a transfer time. समझ में आ गया है? Then rotational time कुछ बोल पाओगे? हेड मूवमेंट तो मैं कुछ बोलूंगा बाद में. रोटेशनल टाइम, आरपीएम.
आप हार्ड डिस्क में देखे होंगे 7200 आरपीएम हार्ड डिस्क, 5400 आरपीएम हार्ड डिस्क, 7200 आरपीएम हार्ड डिस्क थोड़ा ज्यादा पैसा है एंड 5400 आरपीएम थोड़ा कम पैसा है। आप अगर आपका ये भी कंप्यूटर में देखोगे पीछे कुछ लिखा होगा, किसी किसी में लिखा होता है, नहीं तो सिस्टम को जाओगे तो पता चल जाएगा हार्ड डिस्क का रोटेशन क्या है। मतलब आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मींस इन 1 मिनट दैट डिस्क इज रोटेट 5400 टाइम्स। मतलब 1 मिनट में एक डिस्क रोटेट कितना करेगा? 5400 टाइम्स। लेकिन आपको क्या है, once the head come top of the track, उसी ट्रैक में कहीं पर होगा। सपोज ये मेरा ट्रैक है, आपका हेड आके यहां पॉइंट आउट किया, सोच लीजिए, लेकिन आपका ये रोटेट कर रहा है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट इज ए क्लॉकवाइज, हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर ट्रैक सेक्टर अंडर दिस हेड? कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? पूरा होल रोटेशन एक चाहिए कि नहीं? मैक्सिमम। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रोटेशन इफ इट इज 7200 आरपीएम डिवाइडेड बाय 1 वन रोटेशन कितना आएगा? क्विक 1 डिवाइडेड बाय, सही बोले? यस, 1/7200। दैट मच मिनट और नॉट दैट मच मिनट चाहिए कि नहीं? सो हमारा रोटेशनल टाइम पता चल गया। क्यों आप बोल पाए क्यों 1 रोटेशन चाहिए? सपोज ए मेरा 0th ट्रैक सेक्टर था, ये मेरा 15 सेक्टर है। सपोज आप 0 पे हो एंड एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कब आपका 15 नीचे 0 में आएगा? पूरा मूवमेंट करना। अगर कोई बोलेगा सर 0 पे है मुझे 1 चाहिए, देन लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, बट व्हाट यू आर कंसीडरिंग हियर द मैक्सिमम मूवमेंट यू आर कंसीडरिंग। मैक्सिमम मूवमेंट मींस 1 रोटेशन कि नहीं? समझ में आ गया? सो दिस इज माय रोटेशनल टाइम। ट्रांसपोर्ट टाइम क्या है? once your head touch this sector, you read it. Is there any changes happening in that? कभी चेंजेस होता है? नहीं। आप 920 ब्लॉक को रीड कीजिए या 105 ब्लॉक को रीड कीजिए, टाइमिंग सेम और नॉट। सो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोटेशन ऑलमोस्ट 1 रोटेशन इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन सीक टाइम में कुछ फर्क पड़ता है। हाँ सर, अगर वो क्या बोलते हैं आउटर सरफेस में आते तो आसान होता उसका। आप बोलो कि आउटर सरफेस होगा तो जल्दी चला जाएगा, कोई बोल रहा है आउटर सरफेस मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा हेड यहां पर आएगा थोड़ा जल्दी होगा, नीचे आएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, और यहां से यहां मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है। बट वेयर इज द क्वेश्चन कम्स हियर, दिस इज brings a issue. What is the issue? I'll just tell you. Suppose you are now writing a program where inside the program you are reading a.txt, b.txt, c.txt, like d dot and e dot. कितना फाइल रीड कर रहे हो? 5 फाइल. Can you read 5 files in the same program? Yes. F1, F1, F1 5 बार लिखेंगे, F1, F2, F3, 5 pointers. You can do it at a time. Also, you can read it. If you put a thread, then at a time will be true. Yes. Suppose assume that. Suppose assume he has made a 20th block has to be read. कौन सा ब्लॉक बोला? 20th ब्लॉक. उसके बाद बोला कि 40th ब्लॉक. ये बोल रहा है. ये बोल रहा है कि 35th ब्लॉक. And this is saying this is a 75 block. And this is saying 15th block. Are you getting my point? What I told? Yes. He wants 20th block में a.txt डाटा है and 40th block में b.txt डाटा है, 35 block में c.txt डाटा है. Like this it is there. Huh? Head is currently at the 10th block. ब्लॉक नहीं है यहां पर, कौन सा? इस ट्रैक में है. Suppose it is present in this track because block doesn't matter. 20th track, your a.txt file is present. 40th track, which file is present? b.txt, like it is present here. And your current head is present in the 10th track. Can you tell me how many movements it is required? 5. सोच के बोलिए, how many movement? How many total track movement? Track movement. No movement. अभी कितना था? 10 में था.
हाँ 10 से वो 20 को आएगा, कितना मूवमेंट किया? 10 मूवमेंट। 20 से 40 को आया, कितना ट्रैक क्रॉस करके हो गया? अगर देखेंगे 20 मूवमेंट, यहां पर 10 लिख रहा हूं। 40 से 35 को आया, कितना मूवमेंट? 5 मूवमेंट। 35 से 40 को आया, 40 मूवमेंट्स। 75 से 15 को आया, दैट इज 60 मूवमेंट। सो टोटल कितना मूवमेंट? हाँ, एक ट्रैक है, ट्रैक एक ट्रैक से, बिकॉज हेड मूवमेंट हम देख रहे हैं ना, हेड इज मूविंग फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। Okay, suppose your this file present in 20th track, this file present in 40th track, like this, and your currently it is present in the 10th track. Your head अभी currently 10th track है, एक प्रोग्राम रन किया, तुरंत वो बोल रहा है कि सीपीयू मुझे इस ब्लॉक चाहिए, इस ब्लॉक चाहिए, इस ब्लॉक चाहिए। Then how this hard disk controller has to be do this? The hard disk controller will say, okay, 10 से 20 आया, 20 से 40, 40 से 35, like this. Then total head movement कितना हुआ? How many tracks? 130 जो ऐड हो गया, जो भी हुआ मुझे पता नहीं है, बट कैन यू अप्लाई ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हियर? आपका रिक्वेस्ट अभी क्या क्या आया है? सोच लीजिए, 5 प्रोसेस, 5 फाइल्स, एंड ईच फाइल्स नीड्स ए पर्टिकुलर ट्रैक. Your head has to be physically moved to that particular, on the top of that particular track. Now the way it is coming, it is a FCFS algorithm. What you have applied? 10 पे था, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया था 20, आप डाल दिया 20, नेक्स्ट आया था 40, आप डाल दिया 40, लाइक दिस. इट इज FCFS. मतलब आप एक एल्गोरिथम सीखे, दैट इज FCFS. बट कौन सा एल्गोरिथम में कम मूवमेंट करेगा? इसमें जो शॉर्टेस्ट को बनाएंगे, इसको शॉर्टिंग कर लेंगे. कौन पहला आया? 15, उसके बाद 20, उसके बाद 35, उसके बाद 40, उसके बाद 75. अगर इससे देखते हैं कितना मूवमेंट किया, 10 में था, 15 को आने के लिए 5, इसमें 5, इसमें 20, इसमें 20 ना, सॉरी 15, कहीं गलती नहीं आता है मुझे, 15, फिर 35 से 5, इसमें not even 100, forget about. And what happens here? When a number of requests are coming, this does not play any role here. Rotational time सबके लिए फिक्स है, कहीं पर भी चले जाओ एक बार रोटेट होगा, वो फर्क नहीं पड़ता है. Once it is touch this particular head, touch this particular one, read it, वो भी फर्क नहीं पड़ता है. But when a number of requests at a time coming, आता है, क्यों आता है? When thousands of programs are running, each program's page is coming from which area? हार्ड डिस्क से. हार्ड डिस्क में कहां पर होता है? a.out कुछ एग्जीक्यूटिव फाइल में होता है. इनडायरेक्टली एवरी फाइल इज फेच फॉर एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है. अगर उसको देखते हैं, अगर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस एट ए टाइम रनिंग, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग फॉर रीडिंग इट, व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज द रोल हियर? Once the operating system receive all the requests, he apply a scheduling algorithm. So based on the scheduling algorithm, which page, or sorry, which track has to be fetched first, that has to be decided. So that comes that disk. टॉपिक आपको रिलेट लग रहा है ना? पहले सीख लीजिए कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, पहले ढूंढ लिए. अगर मैं वहां पर जाता हूं उस बिल्डिंग को, कहां पर मुझे C4 मिलेगा, वो पहले सीख लिया कंट्रोलर से. फिर अगर 5 आदमी आप लोग गए हो कि वो C4 C3 एक ही पियन है, उसको बोलोगे कि मुझे दिखा दो कहां कहां पर है, वो क्या फॉलो करेगा? वो बोलेगा कि आप मुझे बोल दीजिए कौन कौन सा नंबर चाहिए. वो दिमाग में सॉर्टेड कर लिया कि वो C4 जाना चाहता है, वो बोल रहा है कि C3, वो बोल रहा है कि C10. सो पहले मैं C3 चला जाता हूँ, उसके बाद उसको C4 दिखा के C10 को जाऊंगा. He is analyzing itself or not? कभी वो जाएगा C4 को दिखा के, चलो चलो C10 को, फिर क्या C3 आएगा, बोर हो जाएगा वो. He is applying the scheduling algorithm or not? So next we'll study what are the. तो इसमें तो स्टोरेज लेगा ना. हाँ, क्या होगा दीपंगा? तो इसमें स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगा ना. स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है? स्टोरेज सर वो तो स्टोर करना होगा ना, वो कौन सेक्टर में जाना है उसको. हाँ, वो तो एक डाटा दे रहा होगा कहीं पर, एक टेम्पररी स्टोर हुआ, that doesn't matter. Okay, that will not vary so much. Okay, ready? Then what are the disk scheduling? ये सब हम लोग पढ़ लिया. That is discuss. When I'll give you, you can read it.
Yes, now there are different. One is FCFS, one is shortest seek time first, which you have just now told. Then scan, CSCAN, LOOK and CLOOK. ये पता नहीं है, हम पढ़ेंगे अब. Yes, so first simple requirement. हमारा रिक्वेस्ट क्या क्या है किस ट्रैक के लिए? 23, 89, 132, 42, 189. Current how many cylinders are present total? 200. कहां से कहां नंबरिंग हुआ है? 0 to 199. Currently your disk is at your head is at which position? 100 position. If it is FCFS, then how many movements? Simple or not? 100 के पास हेड था, कहां जाओगे? 100 से 23, then 89, then 132, then 42, then 187. खत्म हो गया. ये भी एक क्वेश्चन ओवर. एस FCFS से डाल पाओगे कि नहीं? Then how many total movement? कैसे कैलकुलेट करोगे? मत बोलिए ना. यस, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. 100 से 23 is 77 and 23 से 89 is 66. Then 43 कर पाओगे कि नहीं? डाउट है? नहीं है? आप अभी सीखे नहीं है, लेकिन इसको आप SSTF में डाल पाओगे? नेक्स्ट पेज नहीं दिखा रहा हूं. कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द टोटल मूवमेंट? शॉर्टेस्ट सीक टाइम पास. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सीक टाइम पास? शॉर्ट करेंगे तो. No. It is not. It is different. Shortest seek time fast is telling wherever your current head nearer to that, what is the request? That will be faster. Suppose मैं 5 नंबर पे हूं, आप लोग नंबर मुझे बोले, बहुत सारे नंबर बोले, मैं पहले कैलकुलेट करूंगा 5 से कौन सा नंबर नियरेस्ट है, उसको पास जाऊंगा. वहां जब रहूंगा, फिर वहां से देखूंगा कि कौन सा नेक्स्ट नंबर मेरा नियरेस्ट है. लाइक दिस हैज टू डू इट. सो इफ दिस इज माय डाटा, कैन यू कैलकुलेटेड व्हाट इज द टोटल हेड मूवमेंट? कर पाओगे कि नहीं? सीख पाएगी कि नहीं? कहां पर अभी है पोजीशन हेड? 100 पे. क्या क्या रिक्वेस्ट आया है? 23, 89, 132, 42, 187. बोल पाओगे पहला रिक्वेस्ट कहां जाएगा? 89. वेरी नाइस. क्योंकि 100 से कौन सा पास है? 89. फिर 89 से कहां जाएगा? देखोगे. जस्ट ड्रा इट क्विकली. टेल मी व्हाट शुड बी द टोटल? 42 सर. हां, लग तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा. मैं देख के बताऊंगा, आप लोग को ना देख के बताऊंगा. 132 तुरंत बस कर दीजिए. कहां से कहां जाएगा बस देख लीजिए. माइनस करना आपका काम है. वो भी गलत कर देते. 132. एटलीस्ट इस वाला क्वेश्चन को कभी कॉपी नहीं करोगे. इसको अगर कॉपी करोगे, आप बोलोगे कि मैं बीटेक नहीं पढ़ रहा हूं और कुछ पढ़ रहा हूं. Yes, online student also I am telling, don't think here तो नहीं हो पाएगा. Yes, कर लिया. टोटल मूवमेंट किसके पास क्या आ जाएगा? हो गया 241 कि नहीं? किसके बाद क्या जा रहा है? एवरीबॉडी हैज डन. 100 से कहां जाएगा? देन नेक्स्ट. यस, कैन आई ओपन? नो. इज इट दिस? 100 से 89, 89 से 132 पास में था, 132 से 187, then it is 42, then 23. 42 फिर 23. मुझे पता नहीं, ये भी गलत हो सकता है. सही है ना? डिस्टेंस लेंगे ना. हाँ, डिस्टेंस लोगे तो 11 है. 89 से 42 बहुत ज्यादा है. 132 पास में था, ठीक है नहीं? 89 से 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47. लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम है, 43. That's why you are coming here. Once you come here, 132 से कौन सा नियर है? 187. फिर 187 से कौन सा नियर है? 273. This idea you have to go. Is it a realistic? नहीं. Yes, it can be also realistic in some scenario. Why? If multiple request has already come, among this decision, taking a decision has no issue. No? Here nobody is saying that you check the whole future. ये तो फ्यूचर नहीं है ना. If 10 request has already come, then among the 10 request, if head is at 100, next कहां पे जाओगे? आप डिसीजन नहीं ले पाओगे. That is okay. Is there any problem? लिखा गया है लेकिन मत लिखिए. Is there any problem in SSTF? टाइम ज्यादा लगेगा. टोटल टाइम ज्यादा नहीं, कम लगेगा. कभी कभी यूजुअली मैं तो पास दे के घूम रहा हूँ. कहाँ ज्यादा दूर जा रहा हूँ? मतलब यहाँ से उधर जाके फिर इधर आऊंगा तो मुझे बोलोगे कि ज्यादा दूर का. सर तो पास टोटली गए डिपेंड वहाँ करता है. चला.
सर ये टोटली डिपेंड करता है वो इनिशियल में कहाँ है वो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर कम हुआ तो बहुत टाइम लगा है उसमें। ठीक है, वो थोड़ा, हाँ, वो आप बोल लो कि एल्गोरिथम थोड़ा लेंदी होगा, ठीक चलेगा। और सर कुछ? जिसका और सर कुछ जो ट्रैक ड्रास्टिकली थोड़ा प्रॉब्लम है? ज्यादा स्लो एजिंग जैसा कुछ। हाँ, एजिंग जैसा कुछ कोई बोल रहा है, एजिंग जैसा कुछ। एजिंग क्या है? हाँ, स्टारवेशन। इज देयर एनी स्टारवेशन? आ सकता है। क्यों? ये मेरा पास में है, वहां पर गया, वो लोग दूर में थे, बहुत लेट इनका में फ्रेंड आ आया। गया तुरंत उस टाइम पे, वहां नहीं गया, यहाँ गया, उनको खत्म किया तो उनका फ्रेंड पास में आ गया, यहाँ पर ही घूम रहा हूँ। वो पूछे थे कब भाई क्वेश्चन में, बताया नहीं। Are you getting my point? Yes or no? If you are at one place, then you are only checking that time who is nearer to me. जब next you solve it, another person has come near to this, but that person has already come 0 o'clock. Assume that, but he will never get a chance to be executed. The same thing is happening in the SSTF. That is shortage of fast or not. So here also there is a chances of start. That's your choice. Very simple. वो बोल रहे हैं कि 100 पे हूं, नेक्स्ट नियरेस्ट है 110 भी है, 90 भी है, कहां जाऊंगा? प्रायोरिटी। वो जो क्वेश्चन पूछ ले, नेक्स्ट एल्गोरिथम somehow sort out. That is SCAN. अच्छा क्वेश्चन। SCAN क्या बोलता है? SCAN करते ना, फिर लाइक दिस। स्कैन कैसे करता है? ऐसे ऐसे करता है? नहीं ना, ऐसे शुरू होगा, आप स्कैन में डालोगे पेपर में, पूरा लाइट दिखोगे, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। सो द सेम थिंग इज सेइंग, द स्कैन शेड्यूलिंग से दैट wherever the head is, it is moving in one direction. Yes, now assume that it is moving in this direction, then what will happen? During this direction, whoever the request has come, he will solve it. मतलब मैं यहां से जा रहा हूं, I'll go to the end, again from the end I'll come back, and during movement whoever will be ask me the question, I'll tell. He's doing like this, means he is starting from this place, so easy. It is starting 100 pe tha, these are the requests, he doesn't know who are the requesters. He's saying currently I am moving in this direction, so let's move. जो आया solve him. After you reach at 0, let's move. जो आया solve him. Like this is doing. Means it is like a SCAN. Are you getting my point? He is moving in one direction, again in opposite direction, again moving in one direction. पहले उसके बाद क्या जाएगा? Once it is reach here, again come here. Once you reach here, again come here. During this time, whoever is coming in that path, he will solve this. Getting my point? So if you can look into this data, he is simply says no need to read these things. Yes. So you know that in which side. If you know, now you can say, sir, ये question में नहीं दिया गया, कौन सा साइड पे जा रहा है? That's your choice. If a question में दिया गया है तो, if question has given like this, currently it is in 100, previously it is 189. कोई बोला previously it is in 89, means in which direction it is moving? This side. Yes, current head position is at 100, previous head position was 89, means in which direction it is moving? This side. Means you have to first solve in this direction, then you have to solve in this direction. ज्यादा हो सकता है, but he is what? There is no frequent movement. He is very simple. Drag, again drag, again drag, जैसे होता है ना, क्या ग्लास जो रेनी सीजन में जो कार का ग्लास, इसके ऐसा ना, वो बाइक का, बाइक का तो ग्लास नहीं होता, वो कार he is doing like this, doing like this, doing like this. हेड तो बस Yes, ये लगेगा। but what is the problem here? The Time problem here, lag. one extra things you have done. Now you understood in which direction will go. Yes, one extra things is after 23 is serving, he is going to the end. उसको कुछ पता नहीं है, वो उसको पता है कि मैं 199 से शुरू करूंगा तो 0 जाऊंगा, ट्रेन में कोई हो नहीं हो मुझे पता नहीं, इवन इफ लास्ट स्टेशन में कोई भी नहीं है फिर भी वो लास्ट स्टेशन तक जाता है, अगेन लास्ट स्टेशन से डेस्टिनेशन,
again destination से last station, like this is moving or not. So what is the extra? This extra movement is happening. देखिए क्यों हुआ? 100 से 89, 89 से 42, 42 से 23, 23 से 0 जाना चाहिए, जरूरी कुछ नहीं था. He found that nobody is present. Still बोल रहा है कि मैं लास्ट स्टेशन जाऊंगा फिर पीछे आऊं. That is solved by look. एक ही में हो जाता है. Look follows the same. वो तो मार्क भी चाहिए ना, हमको पता है कि ये क्या है. मार्क में पूछ लेंगे लुक करो स्कैन करो, थोड़ा सा डिफरेंस में तो हम काट देंगे मार्क. आप बोलोगे सर एक ही तो है चीज क्या ज्यादा है. सो व्हाट इज डूइंग हियर? He is going also like a scan, but whenever he is finding that there is no such request is there, that time he starts moving. Are you getting my point? He start moving to which place? Again this. Then अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला, again he has to go like this. Understood? What is the scan and look? What the scan says? Scan is going in one direction, again go to the reverse. But in scan, it has to be reached at the extreme end, then come back. Even if we don't require that extreme end, means extra movement from 23 to 0 and a 0 to something is required, which is not. Okay, this is between scan and look. Exactly use correct. Exactly use correct. But he is saying at the end 23 मेरा last request था, उससे पीछे कुछ है request नहीं है, then no need to move further. Rather you come. कहाँ यहाँ तक? Oh, obviously, I understood your question. Once it will be reached here, how he can say that I have to go here or there? There will be some timer. If during this timing he is not finding any request, he immediately move to in this direction. That is the look. But scan तो बहुत easy है. He is saying I am going smoothly, reach and again come back. But your question is in look, how he can take a decision that after 187 it has to be come back. So there must be a timer, some limit, which will take a decision 187 से suppose some millisecond he has to greater than check कर लेंगे. Yes, no. He is saying after this, why he will not wait for some time if somebody has come for 189? अभी तक नहीं आया था, लेकिन 189 after 1 microsecond it has come. So let's wait for 1 microsecond in every place. If nothing is present after that, you return back. If something is present, go back. Okay, this is between this. Then comes the next one is CSCAN. Easy है. CSCAN क्या बोलता है कि when you are scanning, the scanning is always in one direction. There is no reverse direction. जैसे टाइपराइटर होता है ना, आप टाइप करो, then it will be move only this side, right hand side. फिर एक क्रैम्प होता है, उसको क्रैम्प करके ऐसे खींच लेते हैं, फिर से टाइप करते हैं. It will never happens that you start from here, go end, again if you type it will be go smoothly, not like this. Always it will be start from the left to right writing. ऐसे भी हो सकता है, आप left to right लिखिए, फिर when you type at this side also it will go from the right to left. It is not happening. So that is done by a CLOOK. The CLOOK, sorry, CSCAN, circular scan. Or the circular scan says that you know that in which direction you move. You move only in single direction. So यहाँ पर कैसे move कर रहा है? He is moving always from right to left. Yes or no? Right to left. So first right to left क्या? Then directly 0 to 199 direct movement. Then from the 199 onwards it is started. Means always the movement is from what? 199 towards 0. Not from the 0 to this. Means it is circular. Circular में जब करते हैं, how you can feel like a circle. If you can feel it starts from 0, continue up to 199. आप क्या 199 से 190 ऐसे करके 0 आते हो? नहीं ना? After 199 again your 0 starts or not? Same thing is saying. So if you can feel my circle is in this direction. Who is 199? This. You travel, reach at 0. 0 के बाद आप क्या 0, 1, 2 ऐसे करते हो या फिर से यहाँ शुरू कर देते हो? This is called.
दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ए सर्कुलर। सर्कुलर में कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ नहीं होता है, आइदर यू फॉलो ए क्लॉकवाइज or you follow anti-clockwise. So here it is following the anti-clockwise. So it starts at 199. यहाँ के 0 आया. After become 0, again it is started from the 199. Guess कर पाओगे क्या होगा C लूप में? Last. नहीं, इसको एग्जाम्पल देख के बताओगे यहाँ कहां से कहां तक जाएगा? 23 जाए? वेरी नाइस। सी लुक में ए इसका एक्स्ट्रा था बिकॉज नॉट नेसेसरी, एंड ए भी इसका एक्स्ट्रा था because there is no 199 present here, but scan says that you go to the extreme, again come back to the extreme. Yes or no? Now what happens? In C look, he is not go to the extreme. Where he finds the end, he joins it. Means there must be one joining from here to here directly. So that is your C look. तो लास्ट रिक्वेस्ट मेरा 23 था, फिर सर्कुलर है, कहां से शुरू करेगा? वही एंटी क्लॉकवाइज, बट माय नेक्स्ट वन इज 197, बट इन दिस केस इट इज कम्स एज अ 190. सो दिस समझ पाए? यस, दैट्स हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मच. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? FCFS क्या है, SSTF क्या है, देन क्या पढ़े? स्कैन, लुक, सील, स्कैन, सील. हाँ, स्कैन सर मुझे लग रहा है सर ये 187 से है ना 199 तक जाएगा फिर हाँ सर इसका ए सुनिए, गलत है सर 199 क्या गलत है? क्यों गलत है? ये यहाँ से 0 तक हाँ ये मैक्सिमम तक जाएगा ना सर? नो नो, ये नहीं था, मैं ये ऐड किया हूँ. ये होना चाहिए ना सर, क्योंकि नहीं, ये तो डाटा नहीं था ना, तो इसलिए इतना दिखाया था. सर एक बार कर दीजिए. नहीं, क्या गलत है? नहीं, आप बोलना चाहिए. आप जा सकते हो, ये करना. सर मेरा यहाँ से ये स्ट्रीम तक जाता है. हाँ, अटेंडेंस चेक लिख लीजिए. लिख लीजिए. मेरा मतलब यहाँ से मिनिमम तक आया, मिनिमम से मैक्सिमम तक भी तो जाएगा ना सर? वो तो जा रहा है, ये डाटा नहीं था इसलिए यहाँ नहीं दिखा. डाटा नहीं था ना. सर आपने बोला जैसे हेड मूव कर रहा है, हेड का मूवमेंट जो है ये, सर आपने बोला कि हम उसमें क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में CSCAN में हम लोग CSCAN में क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं 0 तक जा रहे हैं और फिर डायरेक्ट चले जा रहे हैं. हाँ, लुक में डायरेक्ट में जा रहे हैं तो हमारा हेड है, तो ये तो हार्डवेयर है, तो ये तक डायरेक्ट भी तो मतलब हो ही जाएगा ना. ये धीरे धीरे जाने पर भी टाइम लगता है ना. इफ यू डायरेक्टली मूव, टाइम कम लगता है. ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पे है 23 पे, हाँ, अब हम यहाँ जाना है, वो तो सी लुक बोला. तो सर डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं जाते हम? वो तो सी लुक बोलता है. हम क्या बोले ना सर, आप क्या बोले CSCAN में कि यहाँ पे 0 आने के बाद फिर से डायरेक्ट जाता है यहाँ पे 199. हाँ, 199. तो सर यहाँ पे जो ये इतना दूर डायरेक्ट जा रहा है, तो मतलब ये भी तो सकते हैं सपोज अभी 23 पे, हाँ, तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ, तो यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? मतलब हर दूसरे के लिए डायरेक्ट जाएंगे? नो नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर्कुलर बोलता है कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों नहीं कर पाओगे. आइदर यू कैन मेक ए क्लॉकवाइज और यू कैन मेक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों नहीं कर पाओगे. डायरेक्ट होने के लिए सर्कुलर होना ये तो नहीं. नहीं, 1 मिनट नहीं रुक पाऊंगा. टाइम हो गया, 5 मिनट. तो इसमें ये देखिए आउटपुट सबका दिखा रहा है, लेकिन 9 के पास में आउटपुट दिखा रहा है. 9 और 10 रिप्लेस होकर तो 3-4 डालो तो वो रिप्लेस में वो ये रहेगा, फिर उसके 11 डालो तो 3-4 जो होगा ना 11 में आ जाएगा. तो अभी भी एरर है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहे हैं, मतलब नॉट एबल टू एक्सेप्ट. सर गिग्स कैसे? गिग्स में वो कौन सा कंपाइलर यूज करता है वो डिपेंड करता है. सी का किसका? 20051. क्या सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? सिलेबस सर और 6 क्लास. यस सर. मैं थोड़ा स्लो में हूँ. आपका तो हो गया होगा. नहीं डीसी का किसी का भी चल रहा है, मेरा भी वही 1 वीक लगेगा.